जय झूलेलाल, जय झूलेलाल एंड हरिओम। सिंधी हेरिटेज ऐं श्री दयाल इन हरजणी पेश पिया कनि संस्कार एपिसोड नंबर 20। अॼु लास्ट 5 महीननि खां वठी असां संस्कार हलाए रहिया आहियूं कि समाज खे कुझु न कुझु मिले। असांजा जेके बि प्रोग्राम्स आहिनि सिंधी हेरिटेज जा, उहे के शख़्सियत जे मथां कान आहिनि, पर समाज खे कुझु ॾियण जे लाइ आहे। ऐं असांखे इन प्रोग्राम खे हलाइण लाइ दादा दयाल एन हरजाणी साहिब जो पूरो सहयोग मिली रहियो आहे। त मां रिक्वेस्ट कंदुसि दादा दयाल एन हरजाणी साहिब खे कि हू असांखे हिकिड़ा 2 अखर ॻाल्हाइनि। दादा दयाल एन हरजाणी। हरिओम, जय हरिओम झूलेलाल। हरिओम, जय झूलेलाल। असीं थोरो मंत्र सां चालू था करियूं अॼु। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। जय श्री राम। हाणे अॼु जो मूंखे हिकिड़े दोस्त कबीर जो दोहा मोकिलियो हिंदी में। त कबीर साहिब चए थो, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यह तो खेल मुजाका है, यह तो खेल मुजाका है। दिल मत तोड़ो किसी का बंदे, यह घर खास खुदा का है। त हिन में ॾाढो मूल आहे, ॾाढो मैसेज आहे हिकिड़ो। त दादू ट्रांसलेट थो करे अंग्रेजी में, यू कैन टेयर डाउन अ टेम्पल और अ मॉस्क, tis a frivolous show in pride, tis a frivolous show in pride, but never break a heart, my friend, for in every heart God eternally resides. So he थियो अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन। ये वो कबीर स्पीक्स में ये कयो आहे, 300 sayings are in this manner. तो मूल मतो आहे भई कंहिंजो दिलि न दुखायो, ऐं पहिरियों संस्कार जेको आहे अॼु जो, भई सभिनी खे ख़ुशि करियो, खिलायो, पर दिलि न तोड़ियो कंहिंजो। हाणे मूल मतो आहे कि असांखे संस्कार जेके असीं सिखूं था, त वी वॉन्ट टू शेयर इट विद द यंगस्टर। हाणे प्रॉब्लम छा थियो आहे कि अगरि असीं ख़ाली सिंधी में था ॻाल्हायूं त विलायत में जेके ॿार आहिनि उहे नथा सम्झनि, बंदि था करे छॾीनि। ऐं अगरि अंग्रेजी में था ॻाल्हायूं त के सिंधी वरी इंडिया में नाराज़ पिया थियनि। त हिन धर्म संकट खां बचण जे लाइ मूं हिकिड़ो प्रोग्राम सभिनी खे चयो आहे, लेट अस ऑल स्पीक इन सिंधी प्लस इंग्लिश, माना सिंधलिश। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ विद द होल वर्ल्ड। न त असांजो संस्कार प्रोग्राम वी कैन नॉट कन्वे। असां छा ॾेई सघंदासीं अगरि ख़ाली सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं, ॿार न सम्झंदा त हू असांजी पीढ़ी फ्यूचर जी आहे, नो यूज़, राइट। तो वी हैव डिसाइडेड भई जेके बि असांजा गेस्ट स्पीकर अचनि था उन्हनि खे असां सिख्या ॾिनी आहे, रिक्वेस्ट कयो आहे भई जेको बि तव्हां ॻाल्हायो, थोरो सिंधी ॻाल्हायो, थोरो अंग्रेजी ॻाल्हायो, जंहिंमें असीं सभु ॿार ऐं जेके वॾा आहिनि संस्कार पंहिंजा ॾेई सघूं। विद दैट I will request Narayan ji, please start the show and introduce Veena and the rest. God bless. महिरबानी दादा। दादा जीअं ॻाल्हायो कि सिंग्लिश, अॼु खां अराउंड 15 खनि साल अॻु असांजी भेण दादी पोशी लालवाणी हिकिड़ी पिक्चर ठाही हुई, द अवेकिंग। हुननि उहा पहिरीं पिक्चर सिंग्लिश में ठाही हुई, पर जेके डायलॉग्स हुआ उहे हुननि जा हुआ इंग्लिश में, ऐं जेके गाना हुआ उहे हुआ सिंधीअ में। हुननि जो हिकिड़ो गानो जाम फेमस थियो हो, जाग सिंधी जाग, हाणे वेल न सुम्हण जी आहे, नाणो तो जाम कमायो, नाणो नालो जाम कमायो, पर हाणे जाग, पंहिंजे धर्म खे बचाए, पंहिंजी ॿोलीअ खे बचाए। त असांखे पंहिंजी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ हाणे सिंग्लिश अपनाइणी पवंदी। ऐं असां इंडिया में
हिकिड़ो नओं फॉर्मूलो चालू कयो आहे, शी फॉर्मूला, SHE, शी माना सिंधी, S फॉर सिंधी, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश। त हिन फॉर्मूले सां गॾु असांखे सिंधियत खे वधाइण लाइ स्पेशली भारत में जाम सुठी सफलता मिली रही आहे। त इंग्लिश बि यूज़ करे सघूं था ऐं गॾु ई गॾु असां शी फॉर्मूला बि यूज़ करे सघूं था। ऐं असां अचो त हाणे हिन अॼु जे एपिसोड खे अॻियां वधायूं। मां रिक्वेस्ट कंदुसि असांजे विच में वीना दानसिंघाणी फ्रॉम हांगकांग खे कि हू असांजे विच में अचनि। वेलकम वीना दानसिंघाणी जी। नमस्ते। नमस्ते, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। अॼु असां हिकिड़ो नओं सिस्टम था चालू कयूं कि शो शुरू थियण खां अॻु तव्हां शॉर्ट में पंहिंजो सेल्फ इंट्रोडक्शन असांखे ॾींदा त उहो थोरो वधीक सुठो लॻंदो। ऐं हुन खां पोइ अॼु जो जीअं तव्हांजो टॉपिक आहे हेयर लॉस एंड रिकवरी, हुन जे बारे में असांखे गाइडेंस ॾींदा। त पहिरीं मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुसि कि थोरो सेल्फ इंट्रोडक्शन। अॼु असां मां हिकिड़ी पद्धति ॿुधायां कि असां विश्व हिंदू परिषद या RSS कंहिंजी मीटिंग में वेंदा आहियूं या BJP में, त असांखे हर हिक खे पहिरीं हिकु हिकु मिंट ॾींदा आहिनि। असांखे हर हिक खे पहिरीं हिकु हिकु मिंट जे अंदरि असांखे पंहिंजो सेल्फ इंट्रोडक्शन ॾियणो पवंदो आहे कि भाई असां किथां आया आहियूं, असांजी छा एक्सपर्टीज़ आहे। त मां अॼु रिक्वेस्ट कंदुसि कि हिन जी शुभ शुरूआत असां श्रीमती वीना जी सां कयूं। ऐं वीना जी खे रिक्वेस्ट कंदुसि पहिरीं असांखे सेल्फ इंट्रोडक्शन ॾींदा ऐं हुन खां पोइ अॼु जे कंसर्न सब्जेक्ट ते असांखे ॿुधाईंदा। वीना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहिरीं त मां ॾाढो ख़ुशि आहियां कि तव्हांजे शो में मां इनवाइट थी आहियां। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मिस्टर दयाल हरजानी जी फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वीना दानसिंघानी फ्रॉम Hong Kong and I'm originally from Pune and I've been in Hong Kong for over 40 years now. And of course मां सिंधी ॻाल्हाईंदी आहियां, मां सिंधी आहियां। एंड अॼु जेतिरो बि मां सिंधी में ॻाल्हाए सघंदसि मां ॻाल्हाईंदसि, न त मां जीअं तव्हां चयो शी, मां सिंधी बि यूज़ कंदसि, हिंदी बि यूज़ कंदसि ऐं इंग्लिश बि यूज़ कंदसि ऐं तव्हांखे सभिनी खे खिलाईंदसि। So I'm Veena Dansinghani. I'm the founder director of Naveda Integral Wellness Center in Hong Kong. This is an integral wellness center that started because of from my own story. It has been something that I'm going to be talking about the journey of my hair loss and how I recovered. And today, wherever I am, whatever I'm doing, the work that I'm doing, my journey started from that only. Why I do the work that I do is basically I'm a hair loss specialist right now in Hong Kong, and I help people who have various different issues with their hair problems, whether it's hair thinning, hair fall. That is me being the expert in hair loss. But then, of course, I have many other practitioners at Naveda Integral Wellness Center who help and guide people using an integral way to show them how to take care of their health issues, not just using the natural way or not just using the Western way, but really integrating and using an integral manner to heal and to get your health back into balance. So today I'm very honored to be sharing my journey of, what had happened to me. Why am I so passionate about the subject of hair? It's because this is something I went through it myself in the year 2013. So in the year 2013, I was actually diagnosed with alopecia areata, which is an autoimmune disorder. And this disorder is basically the body's own immune system attacks the hair follicles, which results in round bald patches on the scalp. Now, ये सिंधी में छा चवंदा आहिनि? ये सिंधी में चवंदा आहिनि चोर वार। जेके चोर वार ईंदा आहिनि, चोर बाल ईंदा आहिनि, हुनजा वार सॼा थोरा थोरा किरी करे सभु किरी पवंदा आहिनि। हुनजा अखियुनि जा आईब्रोज बि किरी पवंदा आहिनि, लैशेस बि किरी पवंदा आहिनि, सॼे बॉडी जा वार बि किरी सघनि था अगरि तव्हां हुनखे एकदम टाइम सां हुनखे सॉल्व न करो, हुनखे ठीकु न करो।
ही एतिरो ॾाढो डेंजरस ऑटो इम्यून डिज़ीज़ थी सघे थी. बट जीअं मूं चयो कि 2013 में जॾहिं मूंखे ख़बर पई कि मूंखे एलोपेशिया एरिएटा थी त कीअं ख़बर पई. मूंखे 1 महीने में 70% मुंहिंजो वार किरी पिया. 70% मुंहिंजा वार किरी पिया 1 महीने में. त हू त ॾाढो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो मुंहिंजे लाइ, ॾाढो शॉकिंग एक्सपीरियंस. मूं कॾहिं एक्सपीरियंस ई कान कयो हो या मूंखे ख़बर बि कान हुई कि छा आहे. त अॼु मां जो एम्फसाइज़ कंदसि, मां तव्हांखे शेयर कंदसि कि मूं 8 महीननि में 6 to 8 महीननि में मुंहिंजा वार वापसि अची विया. कीअं अची विया, छो अची विया. त अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि कि हू मूं लेसन्स छा सिखिया. जो मुंहिंजी पंहिंजी जर्नी हुई, मूं लेसन्स छा लेसन्स मूं सिखियो एंड हू चैलेंज मां कीअं निकितसि. एंड ही चैलेंज मुंहिंजे लाइ जो आयो, it actually became a blessing in disguise for me because it has helped me become a conscious consumer, which everybody needs to learn how to become. Because if we do not become conscious consumers anymore, we don't do things consciously, we don't eat consciously, we don't apply the products consciously, not knowing, we are all going to be suffering from some form of health conditions. As we can see that cancer is on the rise, so many autoimmune diseases are on the rise, so many heart conditions are on the rise. And if we do not pay attention to what we are consuming, whether it is topically or whether it is internally, we are not going to be having a very healthy and a happy life. So it is time to wake up. My dear friends, it is really time to wake up. So let me share with you some of the top reasons of why I lost my hair. So before I do that, I also want to say that a lot of people come with hair loss issues. They have hair thinning, hair fall, hair loss, patches, dry, frizzy, they have all sorts of hair problems. And as they say, hair is actually a reflection of your health. I'll repeat that again. Hair is actually a reflection of your inner health. So, like I was saying, that some of my top reasons of losing my hair at the very young and prime age of 38, 39. First of all, I would say is I never listened to my mother's suggestions. Okay, I will explain why I'm saying that I never listened to my mother. That was one of the reasons why I lost my hair. Second is not being a conscious consumer, not understanding what my body needs, how my body operates, and what sort of a care it requires to function to its optimum level. Mistreating, poisoning it with harmful chemicals, harmful food products, whether it being topical, oral, or even internal, ingesting it internally from a very young age. Using products which were referred to me by my friends and family, and only possibly by seeing advertisements and blindly believing that they are good for me. Nutritional deficiencies in the body, not being aware of how the body functions, like I said, and what it needs to function to its optimum level, what it needs, so that what kind of nutrition is required so that it can function to its optimum level. Another problem that I also had of why I lost my hair is irregular and unhealthy eating and sleeping and lifestyle habits, which I'm sure Garan Manum ke thindo hai here. And like I said also, not having a healthy hair care and body care ritual or management. These were some of the main top causes of why I lost that much hair in 2013. It was 70%, my friends. 70% of losing my hair in 1 month is not a small condition. And especially being a woman at a primal age, they say hair is also the crowning glory.
it's the beauty which we generally tend, when the first thing when we look at someone, we look right here, we look right here. So when you kind of lose that much hair suddenly, it also affects your self confidence and your self esteem. However, I was not that sort of a weak person. I have always been a more solution oriented person, trying to find out what is it that actually caused this problem initially. Lessons that I learned, lessons that I learned, my friends, that I want to share with all of you today. Throughout this journey, what I learned is that my mother was always right. As we keep growing, we always, youngsters, we believe that, oh, we know it all. We know what's going on in life, and our elders, they don't know anything. Purane zamane jain, unan ke kuch khabar kane, alai chhata chain, ma kandas jo mujhe friends kan diya hai, mujhe family, mujhe jo TV mein tha budain, unan ke sab khabar hai. But I was wrong, my friends. My mother, she knew everything, and she used to always tell me to do the right things, which is to eat proper fruits and vegetables, to not use chemical products in my hair, and to keep life as simple as possible, and to nourish my body properly with all the foods, all the vegetables that nature has given us. I was very, very picky. I've been a vegetarian since I was 11 years old. But being a vegetarian doesn't mean that you're healthy. If you do not nourish your body properly, then our bodies can become malnutritioned, and they can become hungry, and they will become nutritionally deficient. Like I said, lessons that I've learned. Another lessons which I've learned is hair is your reflection of your health. No trichologist, dermatologist that I went to gave me this kind of a lesson. They did not show me that in order to take care of my problem, which was alopecia areata, I had to look at it from an integral aspect. Nobody gave me a holistic aspect. Nobody showed me a sustainable route. Nobody provided me with a safe solution in Hong Kong. And more than ever, they were very expensive, and they required a lot of time, because they needed for me to visit their centers for one hour, take some outside treatments, buy their products, and that's it. So I was not very happy with this kind of solutions that were available in Hong Kong. And I wanted to go natural, and I wanted to search deeper and go to the root cause of what caused the hair fall. When we treat any disease in the body, it is best to combine a scientific and natural and holistic approach. My friends, I also learned in my journey that our hair and skin products are full of harmful chemicals, which might give us instant results. Like, for example, I'm gray. I have grayed very early in my life. I've grayed from the age of 18. And for me, a quick fix is to use chemical hair dyes, is to highlight my hair and make it look like I don't have gray hair. I wanted to cover my gray hair. I didn't want anyone to see that I had gray hair. So the fastest way is to get a chemical dye, hair dye from the market, or go to the hair salon and have them to color your hair. It might give us instant results, my friends, but in the long run, it caused me alopecia areata and took away 70% of my hair. Not only that, it caused skin allergies. My scalp became sensitive. And you know what? And if people don't really take this seriously anymore, let me tell you, harmful chemical products can cause cancer. Why do we see a rise in cancer these days? My friends, look into your products. Look into what we are consuming on a daily basis. Do you know how to read your nutritional labels? Are you asking the right questions? If you don't, it's high time we become conscious consumers. Lots of our products in our hair, like hair gels, hair sprays,
hair colors, shampoos, anything you pick up are filled with poison. Really, they are filled with poison which are cancer causing. Even look at our food products these days. Our food products are filled with preservatives, additives, and much more, which can cause a disruption to our bodies, a disruption to our body's ecosystem, bringing an imbalance to your hormonal system, to our immune system, to our brain system, to our digestive system, and to all the systems which actually function beautifully naturally. But because of all these chemical products, whether it is physically, we're putting it on, or we're applying, or we're eating, they're full of chemical, harmful chemical preservatives, additives, chemicals which actually will cause a disharmony to our body and a disruption to our hormonal system. So it's very, very important that we become very conscious consumers. What also I learned is food is medicine. It's very important to learn about what kind of food we put into our body, which can nourish us internally and externally. Our kitchens can actually be our pharmacy, our temple. If we only learn what is required for our system to function to its optimum level, we should always go to our root cause. I see a lot of my clients when they come to me, they say, "Oh, give me a shampoo, or I bought this shampoo, I bought this, I bought this, and this is what's going to cure my boy." No, my dear friends, it's much more deeper than that. Hair loss, hair fall, hair thinning, alopecia is just a symptom of an imbalance that is happening within your system. So go to your root cause. Find out where did it all start. Go back to nature. Go back to ancient wisdom, where you have solutions from yoga, Ayurveda, naturopathy, combining it with scientific knowledge. Find the solutions. Find the right people who have this knowledge and share with you how to take care of this hair fall. Don't just rely on biotin, vitamins, or shampoos, which are screaming to your body, because they are not. Become conscious consumers. When we look at health, look at it from three aspects. How does it impact your human health? How does it impact planet health? How does it impact social health? If we choose correctly, we choose consciously, we will see that we are not harming ourselves, we are not harming the environment. If we do harm the environment by using the kind of products we're using, it's going to come back into our system and disrupt us, harm us. So the choices we make, how we can contribute to improving these three areas is very important, or how we are continuously destroying the three major aspects of the global crises that is happening right now: human health, planet health, environmental health, and social health. These are so important because whatever choices we are making today is impacting the entire ecosystem, whether it's internal or external. This is the kind of work we do at Naveda Integral Wellness Center. We empower, we inspire, and we educate people to become conscious consumers by sharing knowledge to understand one's body, the functions, the systems, how they're connected, and what kind of conscious choices we can make to become more, to make sure that we are balanced, whether it's physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually. We share knowledge on how to read nutritional labels. My friends, ta job vathota, ta paro, ki chhai hunme. Khali advertisements mein nahi wano ki hi sutwa hi tanja var suena thi venda, cha tanji shikal sueni thi vendi ne. Samjo, paro, kekha sikho ki nutritional labels kiya parbain. Ingredients andar chain, chai hinme, jo mike actually disease pe kare body ke. The questions pucho, manufacturers ka questions pucho, retailers ka questions pucho. Yahi blindly ne follow kayo ke keba. Here at Naveda, we are offering scientific solutions combined with nature
and the Vedic knowledge to give you a solution. We make sure that all our products are safe and they meet international food safety standards, and we have invested heavily into professionals who will check everything for us. So, my dear friends, I really highly suggest that whenever you look at your hair problems or any health issues, look at it from an integrative approach. Go to the root. Don't just go and find some oils. I see a lot of So, ladies these days. so it is available for us also. Yes. So, in terms of when you're going through hair fall, there are many stages. Stages हूंदा आहिनि. अगरि तव्हां तकर में पकड़े सघंदा त तव्हांजो कुझु थी सघंदो नेचुरली. न त अगरि ऑलरेडी 5 स्टेज ते आहे या 6 स्टेज ते विया आहियो त हू डिफिकल्ट थींदा आहिनि. छाजे लाइ हुनजा फॉलिकल्स मरी वेंदा आहिनि अंदरि. त तव्हांखे अगरि हेयर फॉल या हेयर थिनिंग आई आहे तव्हां बिगिनिंग में ई ॾिसो हुनखे कि मां छा कयां हुनखे. सॼी त फैमिली तव्हांजे फैमिली हा हेरिडिटी बिकॉज आहे. हेरिडिटी भी थी सके थी, जेनेटिक्स भी थी सघनि था, बट डोंट बिलीव इन दैट. अगरि तव्हांजो केरु नंढो ॿारु आहे घर में, हाणे त तव्हां ॾिसनि था कि नंढे ॿारनि खे हेयर थिनिंग थी थिए. छो? इट्स नॉट कि हू जेनेटिकली प्रॉब्लम आहे या हेरिडिटी आहे. ॾाढे जाम रीज़न्स हूंदा अथव. जे मूं त तव्हांखे चयो लाइफस्टाइल हैबिट्स हूंदा आहिनि, छा पिया यूज़ करनि, छा पिया खाइनि, त सभिनीनि में सभिनीनि जो रीज़न्स हूंदा आहे. त इनजे करे तव्हांखे पकड़नो पवंदो जल्दी कि ही प्रॉब्लम छा आहे. वेट न कयो. तव्हां घणो वेट कंदा त हुनजो सोल्यूशन, बिकॉज नेचर जो हलंदी आहे पेशेंटली थींदी आहे. ॾाढो changes you have to bring a lot of changes in your life if you want to follow nature. But nowadays everybody is very quick, instant. They want instant results. Quick hair color kape, quick result kapan. त तकर में ही मेडिसिन खाईंदा, तकर में पैनाडॉल वठंदा, तकर में त तकर जी जो ॻाल्हि थींदी आहे हू सत्यानाश करे छॾींदी आहे. हाणे सभु माण्हू इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट हू. त इंस्टेंट में त भले तव्हांजो इंस्टेंट तो थी वियो पर ॾाढो नुक़सान करे छॾियईं. Right? So my only pratna with everybody is, from the lessons I have learned, is when you have specifically for your hair, don't just go and buy an anti-hair loss shampoo or take some vitamins and biotin and this and think it's going to work. And don't just listen to your friends just because they have used this oil, or let me use this oil, or let me use that oil. No, my dear friends, hair loss is just a symptom of a major problem going on inside. So find the right people to help you, guide you, mentor you, and heal you. So this is what I want to share today. Thank you. Mehrbani. Thank you. Thank you for your kind advice to our viewers. तव्हां जाम सुठो असांखे ॿुधायो कि भई हेयर लॉस ऐं हुनजा सोल्यूशन जे बारे में. त असां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदासीं कॾहिं नेक्स्ट टाइम अची करे असांखे थोरा कुदरती सोल्यूशन बि तव्हां ॿुधाईंदा. ज़रूर. त हा, छोकी हांगकांग जे अलावा ही शो सॼे वर्ल्ड में माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि. त हर हिक जे लाइ हींअर हांगकांग अचणु पॉसिबल आहे कान, पर हुननि खे अगरि तव्हां कुझु नेचुरल वे ऐं ट्रीटमेंट बि ॿुधाईंदा त दैट इज़ यूज़फुल टू देम आल्सो. Yeah, Thank because you. I not only help people in Hong Kong, I will help people worldwide. Okay. So Thank you. the subject is actually a very vast subject. It's a very much. big subject. And it is not a general recipe that I can give to one person and it's going to work for everybody. Like I said, ही वारनि जो प्रॉब्लम हिकिड़ो सिम्पटम हूंदो आहे. सभिनी जा प्रॉब्लम अलॻि हूंदा आहिनि. त हू बिकॉज ऑफ दैट अलॻि नमूने, next time what I can do is I can share with you hair care management. Okay. As you grow, what are the things, what kind of hair care routines that you should follow, what kind of nutrition you need for your body, that can be mindful, that you can be mindful. Okay. Thank you very much, Veena. All right. Thank you so much. Thank for you. your time. तव्हां जाम सुठो असांखे ॿुधायो हेयर लॉस एंड रिकवरी जे बारे में. असां विश्वास था कयूं तव्हां हिकु दफ़ो नेक्स्ट टाइम वापसि असांजे विच में अची करे असांखे थोरो वधीक इंफॉर्मेशन शेयर कंदा. ज़रूरु.
महिरबानी। Thank you. हाणे प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे मां रिक्वेस्ट कंदसि असांजे विच में श्रीमती जया गोलाणी जी खे। उहा असांजे शो ते पहिरीं बि 2-4 दफ़ा अची चुकी आहे, पर मां अॼु वापसि हुनखे रिक्वेस्ट कंदसि कि पहिरीं त असांखे हिकिड़ो शॉर्ट में हिकु लाइन में असांखे इंट्रोडक्शन ॾियनि ऐं हुन खां पोइ अॼु हुननि जो जेको विषय आहे मेरिट ऑफ फास्टिंग, हुन जे बारे में ॿुधाइनि कि भाई विर्त रखण सां असांखे छा छा फ़ाइदा थींदा आहिनि। श्रीमती जया गोलाणी, वेलकम। हरिओम, जय झूलेलाल। हरिओम, जय झूलेलाल। मां जया गोलानी आहियां ऐं हिते हांगकांग में रहंदी आहियां। ॿारनि खे चिन्मय आश्रम में हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो सेखारींदी आहियां कुझु सुठा संस्कार, स्टोरीज़, मॉरल्स, भजन्स। ऐं अॼु मूंखे ॻाल्हाइणो आहे फास्टिंग जे बारे में। मां ख़ुदि फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग कंदी आहियां ऐं मूंखे जाम फ़ाइदो पियो आहे, त आई वांटेड टू शेयर इट विथ एवरीवन। असांजी ट्रेडिशन फास्टिंग जी पहिरीं हिंदूज़ में इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड उपवास। Up means near and vas means to stay, and the final meaning, the total meaning is staying near the Lord. So when we do upvas, it's like we stay near the Lord. So the question arises is, what has that got to do with food? So when we fast for special days like Satnarayan, like Santoshi Mata, the whole day, the mind goes into food. The best of food, the aroma that's coming from the kitchen, the mouth-watering desserts. The whole day we are preparing it, cooking it, and saving it to break our fast. So the important thing is the effects of these certain kind of foods affects our mind and our body. Some foods make us dull, makes our mind dull. So we feel very lazy, tamasic, sajodi leti pau. And some foods make us very agitated or very irritable, like a lot of masalas, a lot of chili. Since foods these days have a lot of chemicals and they are frozen or they are kept for a long time, it creates a very heavy strain on our digestive tract and it creates imbalance and diseases. So all this reduces our energy in the long run. Asanke जीअं सॼो ॾींहुं रिलैक्स करिणो आहे, कुझु करिणो कान्हे लाइफ में, छाकाणि फास्ट पिया कनि. Fasting in its logical viewpoint actually leads to the conservation of energy. It gives the rest to the overworked body that we have. Our digestive system works over and over and over again. It gives time for contemplation and we can pursue the noble and spiritual aspirations of life. So here we can do chanting, we can sing bhajans, we can give a little time for ourselves. All this rest gives a regular rejuvenation and a feeling of lightness and dynamism. Asanke furti thi thi. The spiritual significance of fasting has been forgotten, and normally people fast for the fulfillment of a desire or expectation. Say, God, I fast for you, and in return, you give me good health, you give me wealth, you give me peace. But the idea of fasting in the Hindu scriptures is actually to purify your system and learn to tune oneself with the rhythm of the universe. So the rishis in the olden days forgot to eat because they were lost in meditation or in chanting or in singing for the Lord. I was told that Satnarayan fast is done when you speak Sat and you think of Narayan the whole day. Or when you do Santoshi Mata fast, the whole day you remain Santosh, whatever you have received, whatever you are going to receive, because that is the reason for doing the fast. So we worship deities along with the fasting to imbibe their qualities. When we concentrate upon them, those qualities are evoked into us. Like when we do Ram Jo Puja, then his dharma, his discipline, his humility, or when we pray to Hanumanji, it's like his strength, his valor, his devotion towards Sri Ram, or his love towards Sri Ram is what we invoke in us. Well, how can it be done? Now, fasting can be very challenging and sometimes very difficult. First few days will be very uncomfortable, but the effects are uncountable, mentally and physically.
Fasting can be of different types. Can be performed between 12 hours, 16 hours, 18 hours, 24 hours. And intermittent fasting is something new that I have heard recently. It involves the cycling of eating and fasting, but actually, it's been going on for ages. So, science has proven that it helps to increase the mental clarity and it improves your concentration. Samjh asaji khuleti. It helps in weight loss by limiting calorie intake and eating balanced meals. So, when you eat a little bit and you eat portions, then you tend to eat healthier food. Promotes blood sugar control by reducing insulin resistance, especially useful for people who have diabetes. It allows the glucose to be transported into the bloodstream, from the bloodstream to the cells more efficiently. It also helps in increasing the growth hormone secretion, which is very vital for building metabolism and muscle strength. Can we show the picture, please? It also reduces the inflammation in different parts of the body. So sometimes when we have a little extra inflammation and the body's digesting the food, when it finishes with all the digestion, then our body starts healing, which is an amazing feeling. It may improve your brain function and prevent neurodegenerative disorders like Alzheimer's and Parkinson's. And at the end of it, you'll see that it delays aging and extends longevity. लंबी उम्र जिलाए उंदासी दुनिया में. Can we show the picture? Okay. It has been proven that our human body has the ability to heal itself. So when you give, fasting is like giving a break for the regular functions that the body has to do. Yes. So it helps in all these different functions, and it really has helped me. Fasting gives a break to the body from the regular functions. It's like an internal bath that leaves us lighter and healthier. जीअं असीं वॉशिंग मशीन यूज़ था कयूं 18 कलाक ॾींहं में त द वॉशिंग मशीन जल्दी ख़राब थी वेंदी ऐं जे उनखे 2-3 साइकिल्स जे लाइ यूज़ कंदासीं and then regularly clean कंदासीं, it lasts longer. So same thing with our body. Finally, I must add that fasting does not suit everyone. We must consult our physician, या doctor, या nutritionist, जेको असांखे guide करे. They guide us through it. सभिनीनि जे लाइ कहानी. मूंखे पर्सनली जाम फ़ाइदो पियो आहे. And doctor खां पुछी करे try कजो. When you eat limited meals, when you eat after 3-4 hours break, or you eat 2 times a day or 3 times a day, and the rest of the day you just give water to the stomach. And then the body heals. It gives you more time. You feel lighter. You feel healthier. And like it's shown in the picture, it helps to improve mental clarity and concentration. It reduces weight and body fat loss. It lowers your blood sugar and insulin levels. It helps in the reversal of type 2 diabetes, which is very difficult. But in olden days, our Santa and our Rishis did that. It increases your energy and your growth hormone. So when you started, you feel more energetic. You feel like doing exercise. You feel like doing so many things. Your mind becomes clear. You become fresh. It lowers your blood cholesterol. It reduces your Alzheimer's or Parkinson. It reduces as time goes on. And if it works with you, nothing like it. So it's very important that you can try to do some fasting, maybe once a week, and finally you live a very long life. You once a week, twice a week. If you do intermittent fasting, you can do it on a regular basis of 12 hours to 14 hours to 16 hours, but do it with the guidance of a nutritionist or a doctor so that it helps you in the long run. Jai Jhulelal. जीअं त
जया जी ॿुधायो फास्टिंग असां Yes. हिंदुनि में ई न आहे पर मुस्लिम जे अंदरि फास्टिंग थींदी आहे हू हा रोज़ा रखंदा आहिनि ऐं बरोबर हूअं ई क्रिश्चियन बि ईस्टर जे टाइम ते फास्टिंग कंदा आहिनि हा राइट Yes. हा बरोबर त त फास्टिंग फास्टिंग बॉडी खे ब्रेक थो मिले ब्रेक थो असां मिले हा हा। त फंक्शन मां त उन में ताक़त वधीक थी अचे उन में प्रेयर वधीक था कनि प्रेयर थो अचे बुद्धिस्ट बि फास्टिंग रखंदा आहिनि त हर हिकु धर्म में फास्टिंग जो महत्व आहे ऐं फास्टिंग जो अॼु असांखे जे विच में श्रीमती जया जी आया ऐं उनजो महत्व ॿुधायऊं त मां उन्हनि जो धन्यवाद थो ॾियां थैंक यू महिरबानी जय छोकी अगरि ॾिठो वञे त फास्टिंग ख़ाली हिंदुनि जे लाइ ज़रूरी कान्हे पर हर हिकु धर्म में फास्टिंग जो महत्व आहे अॼु ही जेके मुस्लिम रखंदा आहिनि रोज़ा उहे अराउंड 12 कलाक खां 15 कलाक जो रोज़ो हूंदो आहे हुननि जो सुबुह जो सम्झो चईं बजे खनि खाई वठंदा आहिनि वरी पोइ शाम जो सिज उभरण खां पोइ खाईंदा आहिनि माना फास्टिंग सां गॾु ई गॾु अगरि साइंटिफिक ॾिठो वञे त घणो करे फास्टिंग थींदी आहे ॾींहं जे महिल सिज जे त हुनजो कनेक्शन सूर्य भॻवान सां बि आहे राइट त राइट असांजा 90% जेके विर्त जीअं असांजूं लेडीस हिकिड़ो टीजड़ीअ जो विर्त रखंदियूं आहिनि असांजी सिंधियूं त टीजड़ीअ जे विर्त में सुबुह जो असुर कंदियूं आहिनि असुर खां पोइ माना सॼो ॾींहुं विर्त रखंदियूं आहिनि शाम जो वरी जल बि न ग्रहण कंदियूं आहिनि वरी चंड खे ॾिसी करे हुनखे अर्घ ॾेई करे फास्टिंग जो एंड कंदा आहिनि त उनजो धार्मिक महत्व त आहे ई आहे ऐं जेको साइंटिफिक रीज़न अॼु असांखे जया जी ॿुधायो उन लाइ जाम जाम हुननि जो धन्यवाद त मां हाणे जय झूलेलाल हाणे रिक्वेस्ट कंदुसि असांजे विच में वाराणसी खां उषा पुरुषोत्तम जी खे जेका वाराणसी खां असांजे विच में जॉइन थी रहिया आहिनि जय झूलेलाल वेलकम तव्हांजो स्वागत आहे उषा जी पहिरीं तव्हां असांखे थोरो पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदा ऐं पोइ अॼु जो जेको तव्हांजो सब्जेक्ट आहे लास्ट हिंदू किंग राजा दाहिर जे बारे में सभिनी दर्शकनि खे जानकारी ॾींदा त मां तव्हांजो स्वागत थो कयां जय झूलेलाल जी पंहिंजो परिचय ॾियण खां पहले मां सभिनि खां पहले ऑर्गेनाइज़र्स खे थैंक चवणु चाहींदमि जो मौक़ो ॾिनो मिस्टर दयाल हरजानी मिस्टर बबलानी यू गिव मी अ चांस टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म जय जी थोरो वॉइस क्लियर कान्हे तव्हांजो वॉइस बिल्कुलु कान पियो वॉइस अगरि तव्हां वटि हेडफोन हुजे त हेडफोन पाए वठो डेट इज़ बेटर हेडफोन हा छोकी वॉइस बिल्कुलु ई कान पियो अचे तव्हांजो वॉइस जाम पियो ब्रेक थिए हू टेक्निकल प्रॉब्लम सां असांजे विच में जॉइन थियनि त उषा जी असांखे अॼु राजा दाहिर जे बारे में ॿुधाइण वारी आहे राजा दाहिर अथनि जेके असांजा सिंध जे अरोड़ जा राजा हुआ हुननि जी जेका राजाई हुई उहे सिंध खां वठी अफ़गानिस्तान ऐं गुजरात में उन टाइम ते सूरत ताईं हुई ऐं राजा दाहिर 16 दफ़ा असांजे जेको मोहम्मद बिन कासिम हो उनखे हरायो हो पर राजा दाहिर जे असांजा जेके राजा दाहिर हो उहो चच ख़ानदान जो हो ऐं चच ख़ानदान असांजो जेको आहे सिंधियुनि में उहो हिकिड़ो ब्राह्मण ख़ानदान हो त हुनजे बारे में उषा जी असांखे अॼु वधीक जानकारी ॾींदी अॼु जी शुरूआत मां हिकु कपलेट सां कंदा आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ कपलेट जमाने ने मारे जवा कैसे कैसे तभी खा गई आसमां कैसे कैसे अहिड़ो ई हिकिड़ो आसमान जो सितारो हुयो सिंध जो अंतिम हिंदू राजा राजा दाहिर सिंह जंहिंजे बारे में इतिहासकार लिखण सां ॾाढो परहेज कयो उन्हनि खे जेतिरी जॻह मिलणु खपंदी हुई इतिहास में उहे अधिकारी हुया वधीक जॻह जा पर उन्हनि खे इतिहास में ॾाढी घटि जॻह मिली लेकिन भारत जी 7वीं ऐं 8वीं शताब्दी साक्षी रही हिन परम प्रतापी राजा दाहिर सिंह जी जंहिंजे बारे में शो अॼु जी जनरेशन असांजी फ्यूचर जेके नंढा ॿार आहिनि उहे शायदि ॿुधो ई न हूंदो और अॼु जेके असां पाण आहियूं उहे ॾाढो घटि ॼाणंदा आहियूं लेट मी स्टार्ट विद
फैमिली बैकग्राउंड ऑफ राजा दाहर सेन। राजा दाहर सेन ब्राह्मण पिता चच और क्षत्रिय माता सोहनरी जा पुत्र हुआ। ऐं चच खां पहले सिंध ते छत्रु राजा साहसी राय जो शासन हुयो। राजा शासी राय के कोई भी औलाद न हुई, लिहाजा उन्हें पंहिंजे कश्मीरी ब्राह्मण मंत्री चच खे पंहिंजो उत्तराधिकारी कयो। साहसी राय जी मृत्यु खां पोइ चच राजा ठहियो ऐं चच जी मृत्यु खां पोइ उन्ही जो भाउ चंद्र शासन कयो, पर उन्ही जे भाउ चंद्र जो शासन बि वधीक साल ताईं न हलियो, कुल 7 सालनि ताईं उहो शासन करे सघिया ऐं तंहिंखां पोइ शासन जी बागडोर राजा दाहर जे हथ में अची वई। राजा दाहर पंहिंजे शासन काल जे दौरान सिंध जी गौरवमयी धरती खे पुराणी गरिमा सां जोड़ते हुए खुशियुनि सां भरे छॾियो। प्रजा जी खुशहाली खे राजा दाहर पंहिंजो हिकिड़ो उद्देश्य ठाहे वरितो हुयो ऐं धर्म ऐं जाति जे आधार ते कंहिंसां बि कोई भेदभाव थिए या न भेदभाव न थिए, इन जो वो पूरो ध्यानु रखंदा हुया ऐं लोकहित जे फैसला वठण में वो कॾहिं बि पुठिते न हटंदा हुया। ऐं लोकहितकारी नीतियुनि जे करे सिंध जो वैभव और ऐश्वर्य सॼे विश्व में फैली वियो ऐं सिंध जे बारे में सभिनि खे जानकारी थी। हीअ शस्य श्यामला भूमि आहे, काफ़ी रईस भूमि आहे, दौलतमंद भूमि आहे ऐं सिंध जो देवल बंदरगाह उन्हनि जे शासन काल में व्यापारिक गतिविधियों जो वॾो केंद्र हुयो। सिंध जा व्यापारी तो व्यापार कंदा ही हुआ, पर ईरान, इराक और अरब देशों जा अचण वारा जहाज भी देवल बंदरगाह थींदे हुए वेंदा हुया। अन्य देशनि में वेंदा हुया, उतो समुद्री मार्ग सां उहो व्यापार कंदा हुया। देवल हिकिड़ो ॾाढो महत्वपूर्ण बंदरगाह थी वियो हुयो। हिकु दफ़े देवल बंदरगाह ते अरबी व्यापारियुनि जे सुरक्षा कर्मियुनि बिला वजह देवल शहर ते हमलो कयो और कुछ औरतनि ऐं ॿारनि खे बंदी ठाहे वरितो। राजा दाहर के जॾहिं इन जो ख़बर पियो त हुन देवल जे सूबेदार खे ऑर्डर कयो। वॉइस जंप टुटे पियो तव्हांजो, वॉइस जंप पियो टुटे तव्हांजो, वॉइस क्लियर कान्हे, थोरो वॉइस क्लियर कयो प्लीज़, माण्हुनि जी शिकायत पई अचे जाम। राजा दाहर देवल जे सूबेदार खे धावो बोलण जो ऑर्डर कयो और जॾहिं हुननि जे जहाज ते धावो बोलियो वियो त अरबी व्यापारी जी जान बचाए करे देवल बंदरगाह सां भॼी खड़ा थिया। मुस्लिम जे धर्मगुरु खलीफ़ा खे अरबी व्यापारी और उन्हनि जे सुरक्षा कर्मी जो सिंध जी सेना सां मार वठण रास न आयो और उन्हनि सिंध ते चढ़ाई कर दी, पर उन्हनि खे युद्ध में हार मिली। इन्ही हार सां उहे ॾाढो चिड़ी विया। बार बार उन्हनि सिंध ते आक्रमण कयो और कई बार उहे हारिया, जीअं कि मिस्टर बबलानी तव्हांखे हाणे अञा ॿुधायो। सीधी लड़ाई में हारण खां पोइ अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ जे युद्ध में धोखे सां कमु वरितो। उन्हनि 20 जून 712 ईस्वी जो सैकड़नि सैनिकनि खे हिंदू महिलाओं जहिड़ो वेश पारायो और लड़ाई चढ़ण ते उहे महिला वेशधारी सैनिक रोईंदा हुआ राजा दाहर खे ॾांहुं खणी विया कि असांखे इन मुसलमान सैनिकनि खां बचायो। राजा दाहर उन्हनि जी पुकार सुनी और पंहिंजी हिकिड़ी सैनिकनि जी टोलियुनि सां उन्हनि खे हिकिड़े सुरक्षित स्थान ते पहुचायो और पाण अॻिते उन्ही तरफ़ वधिया जातो कि उन्हनि खे बचाइण जी ॿी गुहार पई अचे। इन तरीक़े सां राजा दाहर अकेला रहिजी विया और शत्रु खे इन्ही ही मौक़े जी तलाश हुई। राजा खे अकेले ॾिसी करे शत्रुनि उन्ही ते आक्रमण कयो और उन्ही जे हाथी खे तीरनि सां बेधे छॾियो, अग्नि बाण सां बेधे छॾियो, जंहिंजे करे हाथी खाई में किरी पियो। राजा उते अकेलो हुयो, शत्रु चारों तरफ सां उन्ही खे घेरे करे काफ़ी वार कया ऐं राजा भी काफ़ी देर ताईं संघर्ष कयो, पर अंततः शत्रु सैनिकनि जे भालनि सां उन्हनि जो शरीर छत विछत थी करे मातृभूमि जी सेवा में सदा जे लाइ सुम्ही पियो। राजा दाहर जी पत्नी जो नालो लाडी देवी हुयो। उहा भी युद्ध कला में निपुण हुई। पति जे बलिदान खां पोइ उहा मैदान में आई, फील्ड में आई, उन्ही युद्ध जो संभालियो ऐं काफ़ी हद ताईं मुस्लिम सैनिकनि में हिकिड़ो भय पैदा कयो। मुस्लिम सैनिक काफ़ी उन्ही सां ॾकिया, पर कुछ विश्वासघाती उन्ही जी पंहिंजी सेना जा विश्वासघाती अरब सेना सां मिली विया, जंहिंजे करे रानी खे आभास थी वियो कि युद्ध जो परिणाम उन्ही जे फेवर में न थींदो
ऐं उनी पंहिंजे सतीत्व और पवित्रता जी रक्षा करे ॿियनि सिंधियुनि जे क़ौम सां गॾु जौहर वठी वरितो। रानी लाडी देवी जे बलिदान खां पोइ राजा दाहर सेन जी वीर कन्याऊं सूरज देवी ऐं परमल देवी उहे बि महल खां निकितियूं ऐं मोहम्मद बिन कासिम जे सैनिकनि जो सामनो कयो। राजा दाहर हिकिड़ो इंसाफ़ पसंदि राजा हो। हुन जे शासनकाल में 3 तरह जी अदालतां हुयूं, जंहिंखे कोलास, सरफनास और गनास चयो वेंदो हुयो। ऐं उन खां वॾा मुक़दमा जेको हुआ उहे राजा वटि वेंदा हुआ, जेको कि सुप्रीम कोर्ट जो दर्जो रखंदा हुया। आरोड जे युद्ध में वञण खां पहले राजा दाहर हिकिड़ी ॻाल्हि चई हुई कि मां खुली लड़ाई में, खुले युद्ध में अरबनि सां विढ़ण थो वञा ऐं मां पूरे सामर्थ्य सां विढ़ंदुमि, उन्हनि जो सामनो कंदुमि। अगरि मां उन्हनि खे कुचले थो छॾियां त मुंहिंजे साम्राज्य जी नींव और मजबूत थी वेंदी, पर अगरि मूंखे वीर गति थी प्राप्त थिए त हीअ युद्ध भारत और अरब जी किताबनि में लिखियो वेंदो। इन जे बारे में महान महान माण्हू ॻाल्हाईंदा ऐं इहो चयो वेंदो कि राजा दाहिर देश जे लाइ पंहिंजे दुश्मननि सां लड़दे हुए जिंदगी जो बलिदान ॾियो। लेकिन अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे कि असांजे इतिहासकारनि इन राजा जे बारे में लिखण सां काफ़ी परहेज कयो। असांखे या असांजे ॿारनि खे काई बि इतिहास में अहिड़ी जानकारी नथी मिले जंहिंसां कि असांखे राजा दाहर सेन जे बारे में पतो पए। मुगल राजाउनि जी, मुगल बादशाहनि जी, मुस्लिम राजाउनि जी काफ़ी जानकारी असांखे बि आहे, असांजी नई जनरेशन खे बि आहे, पर हिन हिकु लास्ट हिंदू सिंधी राजा जी जानकारी काफ़ी सीमित आहे। राजा दाहर अहिड़ो हुयो कि जंहिं प्रोफेट मोहम्मद जे परिजननि खे बि सुरक्षा ॾिनी ऐं पंहिंजे राज्य में शरण ॾिनी। वो राज जी काफ़ी वधायो, प्रजावत्सल हुयो, मातृभूमि जो सच्चो सपूत हुयो ऐं हर एक सिंधी खे राजा दाहर जे कार्य ते फ़ख्रु हुजणु खपे। राजा दाहर सेन साधु संतन, सन्यासिन ऐं समाज सुधारनि जे माध्यम सां गांव-गांव में मातृभूमि जी रक्षा जे लाइ जन मन में राष्ट्रीय भक्ति जी जोत जगाई हुई ऐं अॼु असांजे देश खे राजा दाहर जहिड़े वीर सपूतनि जी घुर्ज आहे। राजा दाहर और उन्हीं जे परिवार जे बलिदान सां प्रेरित थी करे हिकिड़े कवि कुझु पंक्तियूं लिखियूं ऐं जंहिंसां ई अॼु ॻाल्हि खे ख़तमु करणु चाहींदासीं। ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मखीअ सां मिठड़ो, मिसरीअ खां मिठड़ो, संसार जे सभिनि देशनि खां सुहिणो, कुर्बान हिन वतन ते कयां पंहिंजो बदन, ही मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। जय झूलेलाल। मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, ही अखर हुआ असांजे पदम श्री दादा दुखाइल जा, जिन लिखियो हींअर वेझड़ाईअ में 60 साल अॻु असांजे मिठड़े शहर गांधीधाम में। दादा दुखाइल असांजा सिंधियुनि जा हिकिड़ा महाकवि हुआ, राष्ट्र कवि हुआ। ही उन्हनि जी रचना हुई। ऐं अॼु बि रोहिड़ीअ जे पासे में हिकिड़ो स्थान आहे, सतियुनि जो स्थान, जिते महाराणी लाडीअ उते पंहिंजो ज़ोहर ॾिनो हो। हूअं त मूंखे मां घुमियो कान आहियां, पर मुंहिंजी माउ रोहिड़ी जी हुई त उहा मूंखे ॿुधाईंदी हुई कि असां हुते हर साल मेलो लॻंदो हो सतियुनि जो ऐं हुते उहा वेंदी हुई। त रोहिड़ीअ जे पासे में हिकिड़ो आहे सतियुनि जो स्थान, जिते ज़ोहर थियो। अॼु असां इतिहास में पढ़ंदा आहियूं कि भई राजा अकबर जे टाइम ते राणी पद्मावतीअ ज़ोर कयो, हुन ज़ोर कयो, पर सभिनीनि खां अॻु ज़ोहर जेको थियो उहो सिंध में राणी लाडीअ कयो असांजे हिंदुस्तान जे इतिहास में। ऐं कुझु साल अॻु राजा दाहिर जे बारे में राजस्थान में जेॾी महिल असांजा वासुदेव देवनानी साहिबु एजुकेशन मिनिस्टर हुआ त हुननि स्कूल पाठ्यक्रम में हिन जो खे एड कयो आहे। ऐं हाणे वेझड़ाईअ में ई लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश जी सरकार बि राजा दाहिर जो लेसन क्लास 4th में राजा दाहिर जो हिकिड़ो लेसन रखियो आहे। ऐं हर साल राजा दाहिर जे यादि में हाणे अजमेर में हिकिड़ो वॾो स्मारक ठहियल आहे। मां सम्झां थो दादा दयाल हरजाणी उहो राजा दाहिर सिंह स्मारक घुमियो हूंदो पक अजमेर में। ऐं हुते राजा दाहिर सिंह जी हिकिड़ी वॾी
मूर्ति बि लॻी आहे ऐं हिकिड़ो वॾो म्यूज़ियम बि ठही रहियो आहे। त सॼी जेका असां जेके हींअर दुबई खां महेश नेबडाणी जो मैसेज आयो कि राजा दाहिर सिंह स्मारक अजमेर में आहे, त मां बि पाण ॾिसी आयो आहियां चङा साल अॻु। त राजा दाहिर सिंह जे बारे में हाणे जल्दी ई भारत सरकार, मुंहिंजी ॻाल्हि हले पई, उहा NCERT जे बुक्स में बि राजा दाहिर सिंह जो लेसन शामिल कंदी। ऐं इतिहास जेको हाणे NCERT पुनर्वर्तन करे रही आहे हुन में जल्दी ई एड थींदो राजा दाहिर सिंह जी हिकिड़ी वॾी सुठी कहाणी। त सिंधी हेरिटेज न कि खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम करे रही आहे, पर सरकार सां बि राजा दाहिर सिंह जे स्मारक जे लाइ ऐं गॾु गॾु म्यूज़ियम जे लाइ फंड्स बि घुरी रही आहे कि हुनखे सुठी तरह ठाहियो वञे ऐं हुनखे वधायो वञे। हाणे मां रिक्वेस्ट कंदुसि दादा दयाल हरजाणी साहिब खे कि हू अॼु असांखे मन जी बात कनि ऐं गॾु ई गॾु असां अम्मा खे यादि पिया कयूं त अम्मा जे बारे में बि असांखे कुझु नई ॻाल्हि ॿुधाइनि। श्री दयाल हरजाणी साहिब। जय श्री राम। दादा वासवानी चई वियो असांखे भई सभिनी खे खिलाए तूं बि खिल ऐं खाराए। मुंहिंजे दादा सभिनी जो मूड पंहिंजो पंहिंजो आहे, कीअं खिलाइजे सभिनी खे। चई पथर ते दिलि रखी उहो खिलाए माण्हुनि खे। हाणे दादी चमड़ा फ़ोन कयो मूंखे, दॿक ॾेई मूंखे, मां नाराज़ थी वियुसि। दादा दादी, see how dare you call me Dadi Jamna? I told you so many times not to call me by these old names and Ganga and Tilly. My name is Jamie. Can you call me Jamie? Okay, Jamie, okay, I'll call you Jamie as of now. Tell me, what can I do for you? Say, I would like to invite you for a party. What kind of party? Say, I've called some influential people. Musha, Jamie, I'm so simple. Say, never mind, you're so simple. You don't have a pimple. I said, what's the connection? Say, because I want to introduce you to Dimple. Musha, but I am, say, never mind you are. You want looking for guest speakers, right? So, yes, then you come to the party and meet Dimple. Musha, okay, Dadi. I forgot to tell her Dadi. I said, no, okay, Jamie, I'll come. So, party interviews. हाणे सभु अंग्रेज स्टाइल माण्हू आया हुआ, जंहिं अंग्रेज विया हली सिंधी खे छॾे विया, सभु पिया ब्रिटिश एक्सेंट में ॻाल्हाइनि। हेलो हेलो डेल। अरे मूं चयो यार ही छा पिया चवनि। हाउ आर यू? मां एल करे यस फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? से व्हाट अबाउट वुड यू लाइक टू हैव स्कॉच, वोडका और टी? मूं चयो एनीथिंग विल डू। सो करे करे मूंखे इन्हनि जी ॻाल्हियूं ॿुधी मूंखे जी सेकी अची थी। सो साओ पटे पिया ॻाल्हाइनि अंग्रेजी में, अंग्रेजी एक्सेंट में। मूंखे अहिड़ो साओ जो सेकी थी, वेही रहियो। हाणे वेठुसि, हाणे सिंधियाड़ियूं ज़ालुनि जो ॾिठो। हाणे ॾिसो, सिंधी जॾहिं कमाईंदो आहे या त पंहिंजे जाइ मथां जाइ वठंदो आहे या जोड़नि खे ज्वैलरी वठी ॾींदो आहे। हाणे ज्वैलरी पाइनि किथे, घर में थोरी पाई वेंदियूं, ज़रूरु पार्टी ते वेंदियूं। ऐं पार्टी ते वेंदियूं त सभिनी खे ज़रूरु ॾेखारींदियूं। सो जॾहिं मां वेठुसि त टेम्पल पहिरीं आई, चई हेलो डेल, हाउ आर यू, व्हाट हैपेंड टू यू? त हरी घड़ी पई मूंखे पंहिंजो फिगर ॾेखारे भई जीअं की पंहिंजो हीरो पातल नओं अथसि। ड्रामा पिया कनि सभु। वरी ॿी माई आई, हेलो हाय दयाल, हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू सी? पंहिंजो नेकलेस पई ॾेखारे। टी आई, हेलो दादू ज़ैन, ऐं पंहिंजो इहे बैंगल पई ॾेखारे। पोइ टी आई, हेलो दयाल, हरजानी हरजानी, ऐं इहे दुर पई ॾेखारे। मां ही ड्रामा ॾिसी मूंखे ही मुंहिंजी तबियत थोरी था पुछनि, ही त पंहिंजो ज्वैलरी पिया ॾेखारींदी। ज्वैलरी छो लॻी पई आहे? मूंखे यार चक्कर अची वियो मन में। हुते मां उन्हनि ॾाढो भई एक्साइट थी विया, भई छो ईअं थी वियो आहे। See, Dadu Zain, what's the matter with you? Musha, I'm allergic to hot air. I can't stand all this.
मां डायरेक्टली हुजो भई गरम हवा न खपे मूंखे। ख़ैर शुरू थी त हिकिड़ो धणी भाई आयो, चई you know something, since Hong Kong has applied the quarantine, many people are suffering from psychosis. मन में चुमो यार ये कहिड़ी वरी भला आहे साइकोसिस। गूगल में ॾिठमि त साइकोसिस माना मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग होल पर्सनालिटी। वरी ॿियो माण्हू आयो उथियो, चई रियली नो दे आर सफरिंग फ्रॉम पैरानोया। त मूं चयो वरी ये पैरानोया वरी छा थींदो आहे? त वरी गूगल में ॾिठमि paranoia, mental disorder in which person has delusion of grandeur and persecution. यार ही तो अलाए कहिड़ियूं अंग्रेजी पिया ॻाल्हाइनि। वरी टियों माण्हू उथियो, oh no, it's not like that. You know, Hong Kong people are suffering from bipolar disease. त मूं चयो यार ही वरी bipolar वरी छा थींदो आहे? त श्री खे फोन कयमि, श्री त हू चई maniac depression and low moods, माना मूडी माण्हू। वरी चौथो अञा चालू पे कयो, चई इट्स वी मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, माना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मूं चयो महिरबानी करे बस करियो हाणे। चई सिंधी न सच, व्हाई डोंट यू स्पीक इन सिंधी इंस्टेड? You know that Sindhi is a grammatically and a more superior language than English. Why are you always talking in English? मूंखे खार अची लॻाई, ॾाढो जोश अची वियो। चई Dadu, how can you say that Sindhi is more better than English? English is a language of communication. The Mujamas, okay, I ask you one question. Hello. Yes, sir. दादा अचे पियो, आवाज़ अचे पियो। I think दादा जो Can you hear? yes, now here I am. Okay, the मूं पुछोमांसि, मूं चयो what do you call your father's brother? चई uncle. मूं चयो what do you call your mother's brother? चई uncle. मूं चयो how do I know which uncle are you talking about? See, if in our Sindhi language we call father's brother chacho and we call mother's brother mamo. Same way we have, what do you call your mother's sister or father's sister? Say auntie. Then how can we discriminate between these two? Which auntie are you talking about? Mother's side or father's side? So I told them that listen, we Sindhis are grammatically correct. We have names, specific names for everything. Meherbani kare, be specific, talk in Sindhi. For example, cow. We have 17 names of cows. Cow, by jenge singa kone, yeah, cows with a hump, without a hump, which gives milk, without giving milk. There are 17 nala in Sindhi mein, by how cows' names are. Tamusha, in that case, we have one name for many names and many names for one name of English. Say, how do you call that? मुझे तई सभिनी खे मुंझाए गुरु कयो अथव भाई पोलर डिसऑर्डर आहे, हू डिसऑर्डर आहे, मेंटल डिसऑर्डर आहे। In Sindhi we have only one word, charyo. Simple as that. And that also not charyo, but if a woman is charyo, then we call her cherry. So we have two words grammatically correct for your polar disorder, paranoia and psychosis, one word, and it says it all. So you tell me if Sindhi is more superior than English or not. You are really something. We admit that we will now speak in Sindhi. Mucha ha, Sindhi galayo next time. So anyway, mool mato hai. Last time, Narayanji, are you there? Yes. Can I see you on the screen? Yes, I am there. तव्हांजो वॉइस ब्रेक पियो थिए। हाणे ठीकु आहे। End the show. Last time
टाइम है क्या नारायण जी? हेलो, हरिओम। जेका सिंधी असांजी भाषा आहे अखर थींदा आहिनि ओनली, पर असांजे सिंधीअ में 52 आहिनि। त उन हिसाब सां ई अगरि चइजे त असां सिंधी अंग्रेज़नि खां डबल आहियूं इन द लैंग्वेज। हाणे दादा तव्हां ॻाल्हाईंदा? हाणे टाइम आहे अञा 5 मिंट आहिनि? हा दादा 2 मिंट आहिनि, तव्हां भले। ओके, लास्ट टाइम मूं मॉड्यूल दिल से जो प्रोग्राम चालू कयो हो, त उन में पहिरियों जेको आहे, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन डेस्टिनी, माना वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर डेस्टिनी। चलो जेको थिए पियो असांजे कर्मनि से सारू थिए थो। ॿियो जेको आहे, हिन ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे? मक़सदु थोरी आहे भई सुबुह साण उथो, ब्रश कर ऐं ब्रेकफास्ट खा, लंच खा, डिनर खा ऐं ख़ाली ॻाल्हियूं करी। न, दुनिया में असीं आया आहियूं हिन पृथ्वी ते, असांजो मक़सदु आहे मोक्ष प्राप्त करणु, पाण खे सुञाणणु, माना टू अचीव अ स्टेट ऑफ परफेक्शन। दिस शुड बी आवर प्राइमरी गोल, एंड सेकेंडरी गोल शुड बी मेकिंग मनी। एंड जीअं असांखे सेखारे वियो आहे भई धर्म, अर्थ, काम ऐं मोक्ष। त दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। थर्ड असां चयो भई वी आर आवर ओन हैबिट्स। जेके बि असांजो जेको जीअं असांजा आहिनि लक्षण, उन हिसाब सां असांजी पर्सनैलिटी थींदी। लक्षण खे सुधारियो। हाणे सभिनी जा लक्षण हाणे सभु सुठा त कोन थी सघनि, त हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स? दिस इज़ द बिगेस्ट इक्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। असांखे केतिरियूं वीकनेसिस आहिनि, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दोस? हाणे त पहिरीं जेको आहे भई संग जो, जहिड़ो संग तहिड़ो रंग, असांजा वॾा चई विया आहिनि। ही मां चवंदी, टेल मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हू यू आर। त फ्रेंडशिप वी शुड कीप विथ पीपल हु आर इंटेलिजेंट, हु आर हैव गॉट गुड संस्कृति, त उन मां असीं थोरो प्राप्त करे सघूं उन्हनि जा प्राण शक्ति, उन जा वाइब्रेशन्स ऐं उन जा भई जेके ज्ञान आहिनि। वी मस्ट ट्राई टू कीप फ्रेंडशिप विथ पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन अस एज सच। त संग जो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। ऐं तई ॾिसंदा, हैबिट्स घणई क़िस्म जा थींदा आहिनि। फिज़िकल, केरु भई ब्लिंक अखियूं ब्लिंक कंदा, केरु भई हथ पिया शेक कंदा, या फीट पिया शेक कंदा, या बियर्ड खे टच कंदा, या थिंग्स लाइक दैट, या शिकिल खे टच कंदा। त these kind of habits are a part of unawareness which has to stop, because this leads to heart problems. This is sign of restlessness. So one has to be very careful of all kinds of habits like smoking, drinking, gambling and other vices, because हिननि ॻाल्हियुनि सां इंसान जो सर्वनाश थी थो सघे, ऐं उन सां गॾु पंहिंजे फैमिली जो ऐं सोसाइटी जो बि सत्यानाश करे छॾ। दैट इज़ वाई यू मस्ट ऑलवेज आइडेंटिफाई, ॾिसो भई तव्हांखे कहिड़ी ॻाल्हि ते हीअ हैबिट उत्पन्न थी थिए, चेंज जे लाइ कहिड़ो फोकस करियो, दोस्त सां ॻाल्हायो चङी तरह। ऐं ॿी ॻाल्हि, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑटो सजेशन, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी। त ईअं अथई। ॾिसो, अगरि तव्हांजे मन में भई कंहिंजे लाइ नफ़रत आहे, त उनखे प्यार जी ॻाल्हियूं भरियो। ऐं इनखे चइबो आहे एंटीडोट सजेशन। त हीअ ॻाल्हियूं करे अगरि तव्हां संग सुठनि माण्हुनि सां रखंदा, इंटेलिजेंट माण्हुनि सां रखंदा, त तव्हांजी सॼो हैबिट्स जेके आहिनि त हिकिड़े खुशबू वांगुरु थी वेंदियूं। इट विल बिकम अ फ्लावर, and this is what sanskar is all about, for all of us to become fragrant flowers of Sindhihood and humanity. So with this, next time we will talk on the fourth
item next time. So for now, So, I'll end with Jhulelal, God bless, and Satnam Saki. ॿिए दफ़े जेको असांजो एपिसोड आहे उहो स्पेशल आहे फॉर वेडिंग रिचुअल्स। कंहिंखे बि वेडिंग रिचुअल्स जे बारे में काई बि जानकारी खपे त असांखे कॉन्टेक्ट करे पंहिंजो क्वेश्चन बि मोकिले सघनि था ऐं शो खां पोइ बि असांखे वरी क्वेश्चन अगरि ॿुधाईंदा त असां वरी हुनखे नेक्स्ट एपिसोड में खणंदासीं। त हिन सां गॾु ई असां अॼु जो ही प्रोग्राम पूरो कंदासीं हिकिड़ी नंढी प्रार्थना सां। हे भॻवान, असां सभिनीनि खे सुबुह ॾे, शक्ति ॾे, निरोगता ॾे, पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहो। हे भॻवान, असां सभिनीनि खे सुबुह ॾे, शक्ति ॾे, निरोगता ॾे, पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य पालन करे सदा सुखी रहो। हरिओम, शांति शांति जय झूलेलाल। शांति। जय झूलेलाल। ऐं हिकिड़ी ॿी सूचना, सिंधी हेरिटेज लास्ट चेटीचंड माना 25 मार्च ते लाइव टेलीकास्ट भारत जे इतिहास में या सिंधियुनि जे इतिहास में शुरू कयो हो। त हिन 25 तारीख़ ते असांखे 1 साल थी रहियो आहे लाइव टेलीकास्ट कंदे। त हिन 25 तारीख़ असां कुझु नवा कलाकार, कुझु नवा ॿार तव्हांजे साम्हूं कुझु नवियूं आइटम पेश कंदासीं। त तव्हां सभु ॼणा ज़रूरु 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 असां सां गॾु हिकु दफ़ो वरी जॉइन कंदा। ऐं 1 साल खां असांखे जेको आशीर्वाद ॾिनो अथव त उहो लाइव टेलीकास्ट जी फर्स्ट एनिवर्सरीअ ते बि असांखे अची करे पंहिंजो आशीर्वाद ॾींदा। हुन सां गॾु जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।